Okay. The question that we are taking today is for the root locus, we are taking second variety. G of s into h of s is equal to k upon s into s square plus 2s plus 3. And we are being told that sketch the root locus. Is everyone okay with this question? Yes, sir. Okay. So what are we going to do in this question is, again, we will start with the same thing. Step 1 will be equal to, we will first see that g of s and h of s are together already multiplied, so we need not do anything with this. We will just look at number of poles. Number of poles, which is denoted by P, is equal to, can anyone tell me how many poles are there? 3, 3. Number of zeros? 0. Zeros are there in the numerator. Since in the numerator there is no value, there is no term of s, therefore number of zeros is equal to 0. Next thing that we can do is P minus Z is equal to 3 minus 0 is equal to 3. Therefore, how many branch will approach to infinity? 3 branch. 3 branches will approach to infinity. Okay. And if there are 3 branches, how many number of asymptotes should be there? 3. Asymptotes. Is everyone okay with what I'm saying? Yes, sir. Yeah. Other people, Arfat, Sarang, Anas, are you okay? Yes, sir. Okay. The next thing that we can do is, now we know that asymptote, angle of asymptotes we need to find, right? For Yes, angle sir. of asymptotes, if we want, we can plot also. Before finding angle of asymptotes, we can plot the, yaad hai, we need to plot s values, right? We need to plot our poles and zeros, right? So to plot poles Yes, and sir. zeros, what we can do is, I'll just take 2 axes. I'll take a proper axis only. Okay. What we need to do here is, we need to plot the values of this. So one of the s value is what? S is equal to, one of the 0 is what? S is equal to 0, right? Yes or no? Yes, sir. Next values we need to find. So we will find it. How can we find it? By solving a square. What do we need to do? We need to, what are the poles? Can anyone tell me what are the poles? S into s square plus 2s Square plus plus 3 2s plus is 3 equal to 0. is This is not 1 plus g of s into h of s. This is number of poles. Whatever is there in the denominator, equate it to 0 to find the roots of poles. Okay. Or if there is something in the numerator that is 0, we can even find the root of the zeros also. Right now we are finding the root of the poles. So we know that one of the root is s is equal to 0 and another root will be equal to s square plus 2s plus 3 is equal to 0. Is everyone okay with this? Yes, sir. Okay. So next what do we need to do? We need to find the roots of s. So minus b, if you remember, plus or minus b square minus 4ac upon 2a. You can directly solve it in the calculator also if you want. Can anyone solve it for me? I will compare this equation with one of the standard equation of quadratic, ax square plus bx plus c. Is everyone okay with this equation? Has everyone seen this equation? Those who are there in the lecture Yes, right now? sir. Okay. So we can directly solve it. S is equal to minus b. What is the value of b? 2 plus or minus b square 4 minus 4 into 1 into 1. Is everyone okay? 1 into 3, sorry. C is how much? C is how much? 3. 3. C is 3, A is 1 and B is 2. Okay. Upon 2A, 2 into 1. So what we can do is, we can simplify this to get S is equal to, give me a second. Minus 2 plus or minus, what will be this value? 4 minus 12, na, right?
Yes, sir. So what is it right what I am doing? 4 minus 4 minus 12. okay, I did a mistake in the question. So sorry. I'll just change it. Don't worry, don't worry. Just a little bit of a error. This is 2. This is what? This is 2. Okay, so this will be 2. Now is it fine? Yes, sir. 4 minus 8 is how much? Minus 4. Minus 4 upon 2, 2. right? So minus 2 plus or minus root of minus 1 is j. So this will become 2j upon 2. Is everyone okay with the error that I made? Yes, sir. So can we Yes, sir. simplify and find the roots? What will be the value of roots? Minus 1 plus or minus j. So the roots will be s is equal to minus 1 minus j, right? Or Yes, sir. minus 1 Minus 1 plus plus j. j. So minus 1 minus j and minus 1 plus j we need to plot. So how can we plot? We can plot it simple. Okay, minus 1 minus j. First of all, this axis is sigma. Sigma. This axis is J omega, omega. which is j omega. Okay, now what is the root? Minus 1 plus j. So minus 1 will be here. This is minus 1 plus j means 1, right? Plus j means 1 Yes, here. sir. Am I right? So minus 1 Yes, plus j sir. will be a Plus 1 point j. here. Okay, then minus 1 minus j will be minus 1 here. The point will be here. Is everyone okay? Yes, sir. So what are the three main points that we have got? One of the point is this one of the point is this one, and one of the point is this one. Okay, these are the Yes, sir. roots of the these are the roots of the poles. Okay, and the root locus should pass from some of these poles. Okay, is it Yes, sir. okay? Now, before this, we know this region is always NRL, not root locus region, because we know that the system is unstable in the right hand side, System right? unstable. Yes, Is sir. it okay? Now, once Yes, an sir. odd addition of poles and zero comes, this is one number, right? So this region should Yes, be sir. RL region. Is everyone okay? Yes, sir. Right now? Now, is there any other point where the poles are getting poles are there on this line? No, sir. No. See, the poles are there not on this line. They are there in the XY plane. X sigma J omega plane. There are poles. There are no poles in this line. I hope everyone is okay with what I'm saying. Yes, sir. Is everyone okay with what I'm saying? Yes, sir. This is not a pole. Minus 1 is not a pole. Minus 1 plus j and minus 1 minus j are the poles. Is everyone okay? Yes, sir. This is odd, and on this line, since there are no poles, this total region will be root locus region. Wherever we want to plot, we can plot the root locus region. Okay, so this total Okay. region up to infinity will be a root locus region. Is everyone okay? Yes, sir. Everyone who is there in the session, 5 people are there. Akhtar, are you okay with what I'm saying? Anyone else? Are you people there in the session? Arfat, Anas, can you just give me a nod, yes or no? Yes, sir. Okay. So this whole region is a root locus region. Now, what do we need to do? Since we have identified the root locus region, we need to identify the centroid, right? We know a number of, okay, sorry, angle of asymptotes we need to find, right? We know number of Yes, asymptotes are sir. how much? 3. So we need to find the angle of asymptotes. So what is the formula for finding angle of asymptotes? Theta is equal to 2q plus 1 into 180 degree divided by p minus z. Since number of branches approaching to infinity are 3,
So therefore q की value should be equal to 0, 1, 2. So once we put q is equal to 0, we will get theta 1. So 180 divided by p minus z is 3, we will get 60 degree. Is everyone okay? Yes, sir. Theta 2, we will again put 1. So what we'll get? 3 into divide by 3, 180 degree. And the last will be similar to the third type that we got. 2, 5 into 180, 900 divided by 3. This will be 300 degree. Is everyone okay? Yes, sir. Now what do we need to find? We need to find the centroid. Okay. Centroid is given by term sigma. Centroid is what? Do you remember the formula of centroid? Real part of poles, very important. Real part of poles summation minus summation of real part of zeros Rose. upon p minus z. So just recall what are the poles that we have. One of the pole is 0, one of the pole is -1 plus j, one of the pole is -1 minus j. -1 Okay. minus So what is the real part of pole? 0, -1, zero -1. minus Add all one the minus things. So 0 minus 1 is -2. Real part of 0 is nothing. So this will be 0 divided by p minus z is equal to 3. So this is coming out to 3. be 0.67. Okay. So where are we having our Yes, sir. pole? This is very important. We are having our pole at this point. Sorry, centroid at this point, not pole. What is the centroid? 0.67. Is everyone okay? And Yes, sir. from here, we will draw three axes. One is at 60 degree, one is at 180 degree, and another is at 300 degree. Is 300 everyone degree. okay? Theta is Yes, equal to 60, theta 2 is equal to 180, and theta 3 will be equal to 300. 300 degree. Is everyone okay with what I am doing? Don't draw Yes, this arrow, sir. huh? This is not right. Just draw these lines, and if you don't want to write the angle here, you can write it at the line also. That will be okay. Okay. Yes, sir. Now, three branches are there, and all the branches should approach to infinity, right? So now we Yes, need to sir. draw the root locus. Okay. To draw the root locus, what do we need to? We know that the root locus must pass from this point. This whole region is a root locus region, that is for sure. But these points, if you remember these points, okay, these are the points from where the root locus should pass. Is everyone okay? Yes, sir. Okay. So now what do we need to do? We need to find the breakaway point. Okay, I'll draw that root locus again for you in a simple way. This point was 0, then this was +1, +1. -1. This is sigma. This is minus sigma. This is j omega minus j omega. Is everyone okay? Now, Yes, sir. this is another point. This is, sorry, which is -1. So one of the point will be this one. Another point will be this one. Is everyone okay? Yes, sir. Okay. Now, if you want to draw, like, this whole region will be a RL region. Okay. There is no issue of an RL region here. Now, we need to find the breakaway point. One more thing that we can do, this was 0.67, right? Which is Yes, equal to sir. what? Sigma centroid. Centroid. Okay. Now we need to draw three lines. We can even take three lines. It should not pass from this point, or else you will be thinking like this is passing through +1. Okay. Is everyone okay with what I'm doing? Yes, sir. That's the reason I'm taking it a little differently, so that you don't feel like this has to pass through +1. Okay, this is my theta 1, this is my theta 3,
And if I extend, I'll just take different color for you. This line will be theta 2. we need to find the breakaway point. To find the breakaway point, I already told you. To find the breakaway point, what do we need to do? We need to solve the characteristic equation. Equate the characteristic equation to 0. Now, what is the characteristic equation if you remember? 1 plus 1 plus g of g s of s into h of s is equal to 0. is Now, equal to 0. what is the value of g of s and h of s? K upon s into s square plus 2s plus 2. I have just changed it from 3 to 2. Okay. Now, if I try to simplify, this will come out to be s cube plus 2s square plus 2s plus k is equal to 0. Is everyone okay? Yes, sir. Now, k will be equal to what? If you remember, minus s cube minus 2s square minus 2s. And to find the breakaway point, we need to take dk by ds, which will be equal to minus 3s square minus 4s. Is everyone okay? Yes, sir. Minus 2 and equate it to 0. 0. Therefore, 3s square plus 4s plus 2 will be equal to 0. Can anyone solve this equation in the calci and tell me what is the value? We can Yes, sir. solve it either way, but I want you to solve it in the calci directly. Tell me what are the values of s? Minus 0.666. Minus 0.67. J भी रहेगा ना इसमें कुछ I part भी रहेगा imaginary part. हाँ सर, प्लस 0.47. दो रूट रहेंगे प्लस और माइनस 0.4714. 0.47. This is J. Okay, for instead of I, what do we write? J. Is everyone okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now listen. Earlier, what did we used to do? To check which breakaway point is correct. If you remember, we were getting two breakaway points. We used to put that breakaway point in the K condition, right? And Yes, sir. see if it is coming out to be negative. Do you remember negative होता है तो क्या होता है breakaway condition? Not acceptable. Not acceptable. और जब positive होता है K, जब ये पुट करते हैं तो Acceptable. it is acceptable. Now the problem is how to put this value. This is having a J, right? And this J will get eliminated due to square, but cube and S ka J will not get eliminated, right? Is everyone Yes, okay? sir. And there are how many points to consider? There are 2 points. One is with plus and another is with minus. Is everyone there with me on the same page? Those who are there in the Yes, session, just sir. let me know. Everyone, Yes. let me know. Shoaib, Rajdurai, Arfat, let me know what I am saying. Are you Yes, sir. getting? Yes, sir. Now the okay. Now the Yes, problem sir. is since it is having imaginary part, we can't check it directly. So to check which breakaway point will start the root locus, okay, which breakaway point is feasible to start the root locus, we need to use one more condition. Whenever we are getting breakaway point in imaginary form, we need to use one more condition that is called as angle condition. Okay, what is that condition called as? Angle condition. Angle Now I'll tell you condition. what do you mean by angle condition. Don't worry, just listen to what I'm saying. Just take one value. Suppose S is equal to minus 0.67. There are two values, right? So I'll take plus 0.4714J. I'll test this value, whether this is satisfying the angle condition or not. Okay? Is Yes, everyone sir. okay? Okay. Now, Yes, sir. G of S and H of S, if you remember, what is the G of S and H of S? K upon Very nice. K upon S into S square yes, but plus we know 2S what is plus the root of that. S
plus 1 plus j. Is everyone okay? Because see, s is equal to Yes, sir. minus 1 plus j and s is equal to minus 1 minus j, right? So when I take Yes, it sir. this side, it will be s plus 1 plus j, right? And one value will be equal Yes, to sir. s plus 1 minus j. So I can write it this way also, s plus 1 plus j, s plus 1 minus j. Minus Is J. everyone okay? Yes, sir. Okay. What I am doing, I am trying to simplify. Now I will put this s value in this g of s and h of s. Simple. Okay. So this will be equal to k upon, just look at what I am doing, 0.67. I am just testing this value. So s will be equal to 0.67 plus 0.47j into, again I'll put, what is there? 0.67 plus 1 will be equal to 1.67. Is everyone okay? J plus Yes, sir. Sir, 0.47 will minus be equal to, what happened minus minus? Okay, okay, okay. 0.67. 0.33. 1 minus 0.67 will be equal to what? 0.33. I am just substituting the value of s. Okay. So 1 Yes, minus sir. 0.67 is 0.33. J plus 0.47 will be equal to 1.47 j. I am just substituting. Okay. Yes, sir. The last one will be again 0.33 and this will be minus j. So this will be 0.453 plus 0.53453 nahi, 0.53 j. Is everyone okay? Is everyone there with me on the same Yes, page? Is sir. everyone getting? Yes, sir. Is everyone? Yes, sir. Other people who are there in the lecture, at least reply in the chat if you are there in the session. एस की वैल्यू पुट किया, एस की जो भी वैल्यू थी ना, एस की वैल्यू क्या थी, मैंने कौन सी टेस्टिंग कंडीशन ली है? मेरा माउस नहीं, ये नहीं चल रहा है, एक मिनट. It's not working only. Just give me a second. I think there is oil at my hand. एस की बेटा जो वैल्यू थी ना, एस की वैल्यू वो कंडीशन में पुट किया, एस की जगह पुट किया माइनस 0.67. दिस इज माइनस, सॉरी, माइनस 0.67 प्लस 0.47 जे. फिर एस की जगह पुट किया और इसको रीसिंप्लीफाई किया. ओके. नाउ एंगल कंडीशन क्या होती है मैं बता देता हूँ. एंगल में क्या करना है, एंगल ऑफ दिस फाइंड करना है. तो जब आप एंगल ऑफ दिस लिखोगे तो यहां पर भी आ जाएगा एंगल ऑफ के के साथ कुछ नहीं है तो लिख दो J0. ठीक है. फिर यहाँ पे भी लिखो, ये BEE में करते थे माइनस 0.67 प्लस 0.47 जे. ओके. फिर एंगल ऑफ 0.33 प्लस 1.47 जे. याद है BEE में करते थे? याद है? कोई है लेक्चर Yes, में? sir. ठीक है. तो जो BEE में करते थे वही कर रहे हैं. Yes, अब sir. इसको कैल्सी में डायरेक्टली एंगल मोड में लेके जाएंगे ना, तो इसका आपको एंगल मिल जाएगा कितना है. वैसे 10 इनवर्स ऑफ दिस बाय दिस करेंगे तो भी मिल जाएगा. 0.47 डिवाइडेड बाय माइनस 0.67 10 इनवर्स करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा. तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 10 इनवर्स ऑफ 0 बाय एनीथिंग विल बी 0 डिग्री. इज इट ओके? Yes, sir. और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये, इसको जब आप 10 इनवर्स ऑफ 0.47 डिवाइडेड बाय 0. माइनस 0.67 करोगे तो आंसर आता है 144.8 डिग्री. ओके. इसका एंगल आता है 77.3 डिग्री. ओके. और ये लास्ट वाले का एंगल फिर से 0.53 डिवाइडेड बाय 0.33 आएगा माइनस 58.09 डिग्री. ओके.
अब ये तीनों एंगल जो है वो तीनों एंगल को आप ऐड कर सकते हैं। तो 144 प्लस 77.3 माइनस दिस करो तो आपको आंसर मिलता है 0 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल कितना आ रहा है 164.11 डिग्री। ओके, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है माइनस 164.11 डिग्री। इज एवरीवन ओके? यस समझा सर। मैं क्या बोल रहा हूं? तो एंगल कितना आ गया जी ऑफ एस और एच ऑफ यस एस सर। का माइनस 164.11 प्लस डिग्री। ब्रेक 164 पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करने के लिए अच्छे से सुनो, और ब्रेक अवे पॉइंट टू एग्जिस्ट एंगल शुड बी मल्टीपल ऑफ 180। समझ रहा है? एंगल शुड बी मल्टीपल ऑफ 180। एवरीवन ओके? यस और नो? यस सर। So this is not a multiple of 180 degrees. So no breakaway point. This is not a breakaway point. This is for sure. This is not a breakaway point. Okay. This is यस not a सर। breakaway point. Now other value is what? Minus 0.67 minus माइनस 0.67 माइनस 0.4714J. 0 पॉइंट। Okay. Now if you put this, I'll tell you what is यस going सर। to happen. सुनो अच्छे से, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो ये माइनस में एंगल आया था वो एंगल आ जाएगा 164.11, एग्जैक्ट सेम आएगा प्लस के साथ। समझ रहा है? तो एक ब्रेक अवे फाइंड किया, अगर वो यस सर। क्या नहीं बनता है, मल्टीपल नहीं बनता है, तो दूसरा भी नहीं बनेगा। समझ रहा है क्या कह रहा हूं? यस सर। yes or no? It should, sorry, angle should be यस। odd multiple of 180 degree। किसका odd multiple? I hope everyone is okay now। किसका मल्टीपल होना चाहिए? odd मल्टीपल। ठीक है, odd मल्टीपल क्या होता है? 1 3 5 7 0 डिग्री। अगर इसका आंसर ही 0 डिग्री आ जाता तो क्या ये मल्टीपल ऑड होता या इवन? बोलो, इवन होता? ऑड नहीं होता, 1 1 रहता तो ऑड होता ना। So for breakaway point to be existing, angle should be odd multiple of 180 degree. Is everyone okay? यस सर। Now last thing करते हैं, intersection with imaginary axis। याद है? ब्रेक अवे नहीं है तो कैसे बनेगा वो देख लेंगे, बट इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस, रूट लोकस कहां इंटरसेक्ट करेगा इमेजिनरी एक्सिस पे, इसके लिए याद है क्या यूज करते हैं? रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। क्या होता है रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया? क्राइटेरिया। 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। यस और नो? तो क्या था? बराबर बोल रहा यस हूं ना? सर। सॉरी, हाँ बराबर है। तो ये क्या आता है, इसको सॉल्व किया था हमने, के प्लस, सॉरी अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसको रूथ हर्विट्ज से सॉल्व करेंगे। क्या रहेगा? पहले एस क्यूब, पहले क्या आएगा? 1 1, फिर 2, फिर 2 0, एस स्क्वायर 2 2 के, के 0 नेक्स्ट इज 0, नेक्स्ट एस रेस टू 1, 0 4 माइनस के divided by 2 and this will be 0, s raised to 0, this will be k, right? So what is the के। marginal value? यस सर। 4 minus k upon 2 is equal to और 0, माइनस के अपॉन 2 इज therefore इक्वल k टू 0। marginal is equal to what? 4। now what is the auxiliary equation? auxiliary equation क्या है? 2s square 2 plus k is equal to स्क्वायर plus k, 0। k s raised to 0 is equal to 0. What we are getting? 2s square plus 4 is equal to 0. s square is equal to minus 2। तो माइनस 2 का जो रूट सबको पता है ना? 1.414 j। ओके, यस सर। प्लस और माइनस 1.414। तो एक पॉइंट आ गया यहां पर, एक पॉइंट आ गया यहां पर। ओके, थोड़ा सा यस सर। इक्विवेलेंट स्पेस में बनाता हूं। देखो, एक पॉइंट आ गया, एक सेकेंड, एक पॉइंट आ गया यहां पर और एक पॉइंट आ गया यहां पर। इक्विवेलेंट स्पेस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है? 1.414। यस और नो?
और ये भी क्या है माइनस वन Yes, sir. पॉइंट 414 जे. यस और नो? 1 4. Yes, sir. गिव मी अ सेकंड. 1.414 जे. ओके. अब हमको बनाना क्या है, रूट लोकस, बराबर ना? तो ये एक पॉइंट है यानी रूट लोकस का, Yes, sir. ये एक पॉइंट है यानी रूट लोकस का. कंफर्म? Yes, sir. ठीक है. अब रूट लोकस को जब भी ब्रेक अवे पॉइंट नहीं मिलता तो रूट लोकस को बनाने के लिए देखो, रूट लोकस ऐसे कुछ जाएगा इंफिनिटी पर, बराबर जाएगा या नहीं? और यहां से कैसे जाएगा इंफिनिटी पर? हाँ ये पॉइंट से टच होते हुए ऐसे जाएगा या नहीं? बट ऐसा ही क्यों जाएगा? ये कर्व ऐसे भी जा हाँ सकता था सर. ना, ऐसे भी जा सकता था कर्व. तुमने ऐसे क्यों बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है? ये वाला कर्व भी यूज कर सकते थे, ये वाला कर्व भी यूज कर सकते थे. इज एवरीवन देयर विथ मी व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. रूट Yes, लोकस sir. जाएगा, देखो ब्रेक अवे पॉइंट होता तो कहां से जाता? ब्रेक अवे पॉइंट से. अब ब्रेक अवे पॉइंट नहीं है तो कहां से जाना चाहिए? Break away point. जो पॉइंट पे क्या है, रूट से. समझ रहा है? अगर Yes, रूट sir. लोकस होता, मतलब ब्रेक अवे पॉइंट होता, तो ब्रेक अवे पॉइंट से पास होता. क्योंकि ब्रेक अवे पॉइंट नहीं है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कहां से पास होना पड़ेगा? रूट लोकस से. ओके. Yes, sir. अब वो किस शेप में पास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मिनट रुको. ठीक है. उसके लिए एक लास्ट चीज करनी रहती है, बता देता हूं मैं यही बताना चाहता था, जगह है क्या? हाँ बता दूं यहीं पे, क्योंकि ये डायग्राम यूज करना है, चलेगा ना? हाँ सर. एक लास्ट चीज फाइंड करनी है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर. याद रहेगा नाम? क्या बोल रहा हूं? एंगल ऑफ Angle डिपार्चर, of departure. जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से. ठीक है. और फाई का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं बता देता हूं. सॉरी, फाई डी से डिनोट करते हैं. किससे? फाई डी से. और इसका फॉर्मूला है 180 माइनस फाइव. ओके. एंगल ऑफ डिपार्चर जरूरी है. ओके. ओके. Yes, sir. Yes, sir. अब फाई क्या होता है वो मैं बताता हूं. फाई होता है फाई ऑफ पोल्स माइनस फाई ऑफ जीरो. ओके. फाई क्या होता है? फाई ऑफ पोल्स Phi माइनस of फाई poles ऑफ minus जीरो. phi क्या of यहां पे 0. कुछ जीरोज हैं? है. No, 0. तो जब जीरोज नहीं है तो नहीं है. उसका एंगल क्या रहेगा? 0 डिग्री. सिंपल. ठीक है. अब सिर्फ तुमको क्या फाइंड करना है? फाई ऑफ पोल्स. ओके. समेशन ऑफ फाई ऑफ पोल्स होता है, सॉरी, समेशन ऑफ फाई ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ फाई ऑफ जीरोस. क्योंकि जीरोस नहीं है इसलिए समेशन ऑफ फाई ऑफ जीरो क्या रहेगा? एंगल ऑफ जीरो जीरो रहेगा. सिर्फ तुमको क्या 0. फाइंड करना है? समेशन ऑफ Poles. पोल्स. अब समेशन ऑफ पोल्स Summation कितने of पोल्स poles. हैं? 3 है. तो 3. 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p3. 5p3. इज एवरीवन ओके? एवरीवन जल्दी बोलो, 5 ही मिनट है, Yes, sir. टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. एवरीवन जल्दी Yes, जल्दी sir. जल्दी. या. So we need to find Yes, sir. 5p1, 5p2, 5p3. Now tell me 5p1, सपोज करो पोल 1 क्या है? 0. दिख रहा है 0 है. Yes, sir. तो इसका एंगल क्या रहेगा एक्स एक्सिस पर? 0. क्या रहेगा बेटा? 5p1 का खुद का एंगल एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा? 0. 0. अब फाइंड करना है 5p2. ये हो गया सपोज को मेरा पोल p2, ये हो गया मेरा पोल p1. याद रखना p2 के एंगल के लिए p1 से ज्वाइन करो हमेशा. जो भी एंगल फाइंड कर रहे ना पोल्स के, वो लास्ट वाले को रिलेवेंस रख के करने का. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? किसके रिलेवेंस से फाइंड करने का? Last. लास्ट वाले के Last रिलेवेंस pole से से. हमेशा फाइंड करने का. ओके. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके. अब मैं बताता हूं 5p1 का एंगल क्या है. अगर 5p1 देखो, ये वैल्यू कितनी है बेटा? इसका वैल्यू कितना है? कोऑर्डिनेट 1 है या नहीं? 1 है ना? Yes, sir. ये वैल्यू कितनी है? 1 है या नहीं? तो ये एंगल 1 कितना है. हो गया? 45. 45. 1045. यस और नो? Yes, यस और sir. नो? ये एंगल कितना था? 90. 90. टोटल तुमको क्या मैंने बोला? मेजर किसके पॉइंट से करना? हमेशा लास्ट वाले को रेफरेंस लेके करना. ठीक है.
तो ये मेरा टोटल Yes, एंगल हो गया। दिख रहा है ये टोटल एंगल क्या हो गया? यहां से लेके जो भी एंगल रहेगा एक्स एक्सिस के साथ, टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 5P2। 90 पहले plus तो छोटा 40. वाला 45 फाइंड किया, उसमें विथ रेफरेंस कर रहा हूं तो 90 ऐड कर दिया, तो 5P2 कितना हो गया बोलो? 135। एवरीवन ओके? 135. Yes, sir. एवरीवन ओके? लास्ट थिंग क्या Yes, sir. करना, अब 5P3 करना या नहीं? P3 के लिए क्या रेफरेंस Yes, रहेगा? sir. P2. P2 रेफरेंस रहेगा या नहीं? अब P2 अगर रेफरेंस रहेगा तो एंगल कितना है? इसके लिए 90. एंगल कितना है? 90 है या नहीं? तो 90. 5P3 डायरेक्ट कितना हो गया? 90 degree. Is everyone okay with what I said? Those who are there in the lecture, Yes, just sir. give me a nod. This is very important. Very important. Yes, sir. Okay. So we have found all the angles. Now what do we need to do? Add. तो देखो क्या ऐड होगा? 135 plus 90 plus 0 कितना हो गया? 5P 225. Yes or no? अब Yes, sir. समेशन ऑफ 5P आ गया 225, समेशन ऑफ 5Z 0 है, तो 5 क्या मिल गया? 225. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो समेशन ऑफ 5D, जब एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड कर रहा हूं, क्या फाइंड कर रहा हूं? एंगल ऑफ डिपार्चर, तो कितना मिला? 180 माइनस 225 कितना हो गया? -45. वेरी नाइस, अंडरस्टूड? Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ आई विल जस्ट टेक 5 minutes एक्स्ट्रा. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. नाउ जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम डूइंग. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखो ये है मेरा 0, ये है मेरा पोल, ये है मेरा पोल. ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज, तो अगर ये देखो मैं बता रहा, एंगल ऑफ डिपार्चर दोनों पोल के लिए रहेगा. एंगल ऑफ डिपार्चर विल बी फॉर बोथ द पोल्स. इज एवरीवन ओके? दोनों Yes, sir. पोल से कैसे डिपार्ट होगा मेरा रूट, लोकस कैसे डिपार्ट होगा, उसके लिए एंगल ऑफ डिपार्चर विल बी देयर फॉर बोथ द पोल्स. ओके, Yes, sir. तो मैंने जो स्टार्ट किया है ना, मैंने ये वाले पोल के लिए किया. प्लीज ध्यान देना, एंगल ऑफ डिपार्चर डी, जब मैंने 5D1 बोला है ना, तो इट इज फॉर दिस पोल. कौन से पोल के लिए मैं कर रहा हूं? P1 के लिए, सॉरी P2. P2 के लिए कर रहा हूं, क्योंकि यहां तो डिपार्ट होने का चांस ही नहीं है. डिपार्ट या तो यहां से होगा या तो यहां से होगा. अब P2 के लिए एक्सिस बना दो, एक्सिस बना दो. एक्सिस बना दिए तो 45 डिग्री माइनस ये है या नहीं? ये Yes, है या sir. नहीं 45 डिग्री माइनस? हाँ या Yes, ना? sir. तो ये हो गया हाँ, मेरा sir. डिपार्चर. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. एवरीवन, अब जब मैं यहां से देखूंगा, अब देखो एंगल ऑफ डिपार्चर मुझे इसके लिए भी फाइंड करना है या नहीं? करना है ना इसके लिए. तो इसके लिए क्या मिला हाँ, था? sir. -45. तो उस दूसरे के लिए क्या होगा? डायरेक्ट बताओ. +45. कितना होगा? Plus 45. +45. तो अगर मैं यहां पे एक्सिस बनाऊंगा तो +45 ऐसे होगा या नहीं? ये है Yes, या नहीं sir. +45 डिग्री? Yes, यस और नो? sir. एवरीवन, Yes, sir. एवरीवन. Yes, sir. Sir. Okay, now we are just ending the question in 2 minutes. Just let me draw. You have understood everything. We just need to draw. I'll draw it in front of you. Just look at the things that I'm doing. This is sigma. This is j omega. This is sigma. This is again j omega. You can put minus j omega also. This is +1. This is -1. This is 1.414. Very important thing. This is minus, I'll just put it a little down. -1.414 j omega. This is j omega. You can directly put omega, not required to put j omega. This is -1. This is +1. This is my point. This is my point. This is, हाँ, तो दिस पॉइंट से एंगल जो बताया मैंने कैसा रहेगा? ऐसे. और यहां से डिपार्चर कैसा रहेगा? ऐसे. ओके, और इंपॉर्टेंट चीज, Yes, sir. वो सेंट्रॉइड क्या था? 0.67, राइट ना? Yes, sir. तो 0.67 सेंट्रॉइड, सॉरी ये बनाना पड़ेगा ढंग से यार, यही प्रॉब्लम है. रुको बना लेते. 0.67 से एक सेंट्रॉइड ऐसे जा रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. दूसरा सेंट्रॉइड फिर से ले लेते, सॉरी सेंट्रॉइड बोल रहा, क्या? एसिम्प्टोड. सेंट्रॉइड से जा रहा है एसिम्प्टोड. दूसरा कैसे जाएगा? ऐसे ही इक्विवेलेंट ले लेते थोड़ा सा. ओके, अब क्या Yes, बताया sir. मैंने? ये कैसे पास होगा? यहां से. मैं रूट लोकस के लिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूं. तो रूट लोकस ऐसे जाएगा या नहीं? देखो डिपार्चर है ना, तो
ऐसे नहीं जाएगा, डिपार्ट यहां से होगा, ध्यान दो, देखो मैंने 45 ज्यादा बना दिया है, ठीक है, तो ऐसे डिपार्ट होगा, समझ रहा है क्या बोल रहा हूं, ऐसे डिपार्ट होगा, और अप्रोच कहां करेगा ये, इंफिनिटी पर। फिर यहां से कैसे डिपार्ट होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ डिपार्चर है ना, हाँ या ना, तो डिपार्ट Yes, अंदर sir. की तरफ नहीं करेगा, इस एक्सिस को लेके करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दूसरा डिपार्चर, ठीक है। ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ डिपार्चर कितना है, 45 माइनस में, 45, और ये वाला भी एंगल कितना है, 45 प्लस में, 45. ओके। उसके बाद दो Yes, sir. दो ब्रांच बन गए कि नहीं, ये अप्रोच किसको करेगा, इंफिनिटी, ये अप्रोच किसको करेगा, इंफिनिटी। तीसरा तो तुमको दिख रहा है कि नहीं, Infinity. कहां जा रहा है, तीसरा ब्रांच ये है या नहीं, किसको अप्रोच करेगा, Infinity. इंफिनिटी। तो तुम्हारा रूट लोकस बन गया। अब इससे क्या पता चला, कहां तक सिस्टम स्टेबल है, स्टेबिलिटी कहां तक रहेगी, जब तक के की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.414, तो ये 1.441. मार्जिनल स्टेबल रहेगा। लेस देन 1.4, 0 से लेके 1.414 तक क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, और Stable. ग्रेटर देन 1.414 पे क्या हो जाएगा, Unstable. अनस्टेबल हो जाएगा। ओके फॉर एवरीवन, Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. is Yes, everyone sir. okay, understood something about root locus? This was a little different question, is it okay? Yes, sir. Yes, yes, That's sir. great. Just give me a second before we wind up. Have you understood? Yes, sir. I'll just